So yes, students, we are here in our unit 1's last session. The session is entitled by the implement mail merge. Wow, very nice and interesting topic is why I'm saying that because it's related to the real life application. In real life, supposingly you are organizing a big birthday party. Okay, you are going to organize a very big birthday party in which you are going to invite me also. Okay, don't forget me first of all. Then second, you are going to create an invitation card. Okay, you are going to create an invitation card, but in that invitation card you will include around 100 people, or you can say 50 people. That means more than 2-3 people. Sorry, people only. So once you are considering more than 2-3 people, then you might ask that कि सर हम एक invitation card बनाते हैं और उसके अंदर बस नेम चेंज करना हो, बाकी इनविटेशन कार्ड की बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा. आई थिंक यही होता है, बिल्कुल है ना. यही आप भी चाहेंगे कि बार बार, जैसे कि मान लो मुझे अगर अपना इनविटेशन कार्ड आशीष को भेजना है तो उसके लिए मुझे अलग से टाइप ना करना पड़े और ना ही मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़े, वो ऑटो जनरेट हो जाए. अब मुझे आस्था के लिए, अक्षय, अक्षत के लिए, अनी, अंजलि, अतुल, भरत, इन सब के लिए अलग अलग थोड़ी ना टाइप करना होगा. So if we want to create a single invitation card and then we want to put the name according to our convenience, according to our list, okay, then we can implement mail merge. Getting my point? Getting my concept why we are going to use mail merge? As the name is suggesting, mail merge. Merging means what? To inserting something. Okay, to merging something. And mail means we are going to send the same PDF, the same document to more than one people. Okay, so mail merge is not only providing in the LibreOffice writer, it's also been provided in Word also, Microsoft Word also. Okay, so any Word document processor which is going to create PDF, Word files, and etc., it will provide you mail merge. Okay, so now I have told you what the basic phenomena behind mail merge. Now we will discuss it theoretically. Mail merge is a feature provided by LibreOffice Writer that is used to send the same basic letter with slight modification. Mark my point, only slight modification. Why I'm saying that slight modification? Slight modification will include the name of the person which is going to be sent. Okay, and to a large number of people at the same time. The mail merge facility is widely used when letters with identical information have to be sent to many people. Mark my point, identical information. That means information will be same, but the person's name and details will differ. The field will be same. Supposingly, if I'm going to send any circular to my class 10 student, then the circular will be same. And when I want to send this particularly individually, then I will change the name, the father name, and let's say address, or let's say age. Okay, so fields are same. What are the fields? Fields are name, father name, and age, but the details will differ. Okay, I hope you are getting my point why we are going to use mail merge. Okay, very interesting, and most questions come from this mail merge also. It is a very basic as well as very crucial topic of our unit 1 after style. So for mail merge we use two documents. Very easy to understand why we are going to use two documents. The first document will be the body, the structure of our mail, the main document, the main body, the main content. That means if you relate the example, that means our invitation. Okay, so our main document will be that invitation card. And the second, data source, yes, from which we will inherit the name of the person. Data source का meaning है कि हम किस किस को भेजना चाहते हैं. It may include name, address, and that means the data of recipients from whom we are going to send that document. Okay, so I hope that I am clear from this paragraph to this one. And mail merge is the process of combining the main document with the data source. So we are going to interlink with this main document to data source containing the name and address of the recipients. The final document is called the merged document. That's why it is called it is entitled by the mail merge. Okay,
So, sir, this is much you told about the mail merge, and mail merge. So now how we can access it? Very easy. Go to the file, click on new, and then create a text document first. Very easy to understand, students. You need to create two documents. First one will be your main document, and then second is data source. So first create an invitation card. Na? First, for doing that, you need to create a text document, and for doing that, you need to click on file, new, and then you will create your text document according to you. And then you will start the mail merge wizard using tools, mail merge wizard, and the wizard will open. What do you mean by wizard? Wizard means that it will lead you until the creation of your mail merge. Okay, it is kind of installation process guide. Okay, it will guide you. Then select this, and select this. Okay, so it will create, it will lead up to you the steps to create the mail merge. Okay, so once again I'm repeating, mail merge is used to send the same data to more than one people. First of all, we need to create two documents, or you can say the two things. First one is main document, and then second we will create an address list, that means data source. For creating a text document, you will click file, new, text document, and will type your data. You will design your text document. That means if you will relate to that example, then you will create your invitation card first. And for doing mail merge, you will click on tools. You know where is the tool tab. Then you will find the mail merge wizard, and then you can see the mail merge wizard will open. Student, this is a very crucial topic, and you may confuse also. You might confuse also, but you need to focus on screen first of all, and the things which I am going to tell you, you need to note down it very you can say that very crucially, और बहुत ही important तरीके से उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिटिकली मैनर में उसको देखना है. अदरवाइज आपने एक भी स्टेप मिस किया, so you may feel confusion. Okay, so first step is select starting document. सबसे पहले हम document को start करेंगे. That means we are going to create our basic or the main document. Okay, so the wizard gives several options for the starting document. Use the current document, create a new document, start with an existing document, or start from a template. क्या होता है कि अगर आपके पास करंट डॉक्यूमेंट यानी कि जो भी आपने अभी मेन डॉक्यूमेंट बनाया है, अगर आप उसी को यूज करना चाहते हैं, देन यू कैन क्लिक ऑन द यूज द करंट डॉक्यूमेंट. Yes, if you want to create instant a new document, then you will select create a new document as the name is suggesting, and start with an existing document. क्या पता आपने पहले से ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना रखा हो जो कि इनविटेशन कार्ड या एक ऐसा सर्कुलर हो जो आपने पहले से ही बना रखा हो, so you can select that existing document also. Or if you want to select any template, then you can select a template also. So I hope that I am clear with step 1, isn't it? Okay, here I have pasted the screenshots also. Use the current document and click on next. Here you can see use the current document, because we are going to type first, so that's why we are going to use the current document. You can select create a new document. You can select start from existing document. If you are going to select existing document, then you will browse it here. And if you are going to use any template, so you will also browse it here. Okay, from this browse button. If you have done it, then click on next. If I will click on next, then the step 2 will begin. What step 2 is saying? The wizard can produce letters or email messages. We can produce a letter. So select letter and click on next. If you want to create your mail merge for letter purpose, then you can select letter, or you can select the email message also with this radio buttons. So here, for instance, we are going to select letter, and then we are clicking on next. Okay. Then if we have clicked on this next, then we will lead to the step 3. Insert address book. Yes, mark my point, students. Now we are going to create an address list from whom I am going to send the letter. Okay, supposedly I want to send my letter to 10 people, then I will mention the 10 people detail, their name, their father name, or you can say address, their age, and etc. Whatever the thing you like to add.
So now student, tell me, for sending an invitation card, which field or which field you will use, students? So this is the most complex step in the result. In this step, we will do three things. Okay, we are going to do three things. Select the address block to use in the document by clicking on select address list. So we are going to select address list. Okay, this means choosing which fields appear and how they look. We may also create the data source right there. The creation of a new data source is outlined. क्लिक ऑन क्रिएट टू क्रिएट अ न्यू डेटा सोर्स। देखिए, आपको एड्रेस लिस्ट में पहले से लिब्रे राइटर ने इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी एंड स्टेट। क्या होगा कि अगर आप इन सभी फील्ड्स को नहीं चाहते हैं, यू डोंट वांट टू इंक्लूड सच थिंग्स, सो आप यहाँ क्या करेंगे, कस्टमाइज पे जाएंगे, वहां से आप डिलीट भी कर सकते हो। और अगर आपको कुछ और ऐड करना है, सपोजिंगली आपको ये भी कम पड़ रहा है, ये फील्ड्स में आपको कम पड़ रहा है, तो आपको कुछ ऐड करना है तो आप कस्टमाइज पे जा सकते हैं। ठीक है, एज इन द केस वी मे एंटर द डेटा सोर्स कंटेंट्स राइट देयर, वी हैव टू एंटर द डेटा वन बाय वन, और फिर हमें एक एक डेटा को एंटर करना पड़ेगा। सपोजिंगली मैं आस्था सिंह को अगर इनविटेशन लेटर भेज रहा हूं तो मुझे आस्था की सारी डिटेल भरनी पड़ेगी, फिर आदित्य की, फिर अक्षत यादव की, फिर आशीष की, अश्लेष की, वन बाय वन पर्टिकुलरली मुझे एक एक लिस्ट मतलब क्रिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज वी वांट टू सेंड दिस इंडिविजुअली। द ऑप्शन shows us on clicking on more from the steps of insert address block। ठीक है, फिर वहां से आप insert address block पे क्लिक कर सकते हैं। The step 4 is saying that create salutation। अगर आप उसमें salutations देना चाहते हैं, जैसे dear and my loving uncle and auntie, and so whatever the salutation you want to give, you can give there. For female it will differ, and for male it will differ, so it's up to you. If you want to give any kind of salutation, such like you want to create a doctor, professor, and etc., so you can mention it also. Okay, so select this document should contain a salutation. Here you can see on the screenshot also. Okay, so to enable the general salutation in list box, some general text are available in the list box, or we can enter alt text also. So we can enter alt text also, or we can choose from the predefined. Now insert personalized salutation. If you will click on this insert personalized salutation, then you can create your own also. Then after you have created the address list, you have created the salutation, now you will adjust your layout. What do you mean by layout? That now you are going to set, now you are going to emphasize how your letter, how your invitation card will look like. So in this step, we can adjust the position of the address block and salutation on the page. We can place the address block anywhere on the page. The salutation is always on the left, but we can move it up, down, bottom, and right, etc. And use the buttons, we can move the elements. Here you can see move up or down. So if you will do move up and down, and if you have done, then this is finish, and edit document and insert extra fields. And once you have created your mail merge, once you have created and once you have done your with your mail merge, then you can edit it also, and you can insert extra fields also if you are supposing that the fields are becoming less. Okay, so this was the theoretical portion. In the theoretical portion, I have told you how you can implement a mail merge, but I know this was not much interesting to understand this in the theoretical manner. Now I'm going to show you how you can implement a mail merge in a practical manner. Okay, so here I'm going to share my screen. So this is my desktop, and here is my LibreOffice Writer or the suite. It is loading. Now in left side I can find writer document. I will double click on it. So this is my LibreOffice Writer interface. Now first, what was the first step? The first step was the creating a new text document. So supposingly I need to write here 2, giving the space, and here I'm writing here as subject invitation card, and then here I am
selecting it. I am writing here a dummy data. You can write anything here. Let's say 5 September. Party will this is my new document, okay, and here I have mentioned some dummy data, so I can adjust it. Supposingly I need to resize it. Here it is, or let's say to 60. Now I want to bold it, then I here, and here I can bold it time also, and I am going to save it. So here I am giving the name as invitation. Okay, it is now saved. So this is my initial document. This is my invitation card. What I need to send it to individually. So where I can find my mail merge wizard, I can find it from tools. Okay, here you can see mail merge wizard. If I will click on it, then it will lead me to a new dialog box. As you can see on your screen, I can select use the current document, create a new document, start from existing document, and start from a template. So I'm going to use this current document because I have typed it. Okay, so I'm going to click on next. Here you can see. Now it is asking that you want to create as a letter or email address. So for instance, I'm going to use as a letter. Now this is a very complex part. Now you can see on your screen, this is the select address list. So from clicking this, you can select or you can create your address list. So here I am going to select it. Now you can see add or create. So here I am going to create it. So I don't want this type of things, title, first name, last name, company name, etc. So I am going to customize it. I'm going to customize it. Supposingly I am clicking this, delete it, delete. So the field I don't want, I can delete it just like this. Supposingly I only want to insert this thing, first title, first name, last name, and rename. And you can add it here also. You can add the element, supposingly address. So you can see the address. So you can choose it accordingly. Okay. So title, first name, last name, and address. This much of data I want in my address list. So I will click here on OK. So here you can see title, first name, last name, and address. So now I will create first title. Let's say Mr. Okay, and giving the name to let's say Atul, last name to Boyal, and address to Bikaner. Okay, now I want to create one more list. Then I will click on next. ये तो एक जने के लिए हुआ केवल अतुल के लिए. अब next, supposingly I am giving Mr. Akshat. Then I will write Yadav, and for instance I am writing here Jet. फिर new. So here I am going to add the third one. Title I am giving Miss, and let's say I am going to enter Anjali Soni here. Address is for
Correct. One more I need to add. Here I am clicking Miss and let me select a name, Disha. Disha Vadwani. Okay. And here address will be Bikaner. Okay. So as you can see here in your screen, if I need to go to my first record, then I can select it here. If I need to go to my last record, I can click here. And if I will move particularly, then I can click on here. Okay. Then I have done with my list. I will click on OK. Okay. So now it will ask me that what name you want to give it. So I am going to give it as class. Here you can see that it will be saved in as type .csv. .csv क्या होता है कि जो आपके फोन में भी एड्रेस लिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो .csv फाइल एक्सटेंशन के थ्रू ही सेव होते हैं। तो ये आपके एज एड्रेस लिस्ट भी किसके थ्रू सेव होएगी, .csv। यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 10 नाम की एड्रेस लिस्ट बन चुकी है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे कि now we have created our address list. Now we will select that address list. Okay, here edit कर सकते हैं आप इसको। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करना है किसी को, डिलीट करना है, रीनेम करना है। ओके, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको ओके किया। Now you will edit. So students, I have created address list LPS named. Okay, so now I can click here on OK. Now this is showing me that this document shall contain an address block. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एड्रेस ब्लॉक में ये कुछ ऐसा शो करेगा कि टाइटल जो है आपका पहले आएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उसके बगल में, फिर एड्रेस लाइन, फिर जिप एंड सिटी। अगर आप इसको एज इट इज रखना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते हैं सो यू कैन आल्सो मैच फील्ड हियर। तो यहाँ पर अगर मैं मैच फील्ड में करूंगा तो टाइटल आप उसको क्या करेंगे, टाइटल में आप दे सकते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, अगर आप फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम की तरह रखना चाहते हैं देन गुड। और अगर आप टाइटल में कुछ नहीं रखना चाहते तो टाइटल आप नन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप वो मैच कर रहे हैं कि फर्स्ट नेम में आप क्या चाहते हैं, लास्ट नेम में व्हाट यू वांट टू गिव। और यस, फर्स्ट नेम में मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवीण, लास्ट नेम में त्रिपाठी, कंपनी नेम LPS एंड एड्रेस लाइन बीकानेर। ओके, सो दिस विल लुक लाइक दिस। ओके, और आप देखिए यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे दिखेगा, प्रवीण त्रिपाठी बीकानेर। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। और अगर आप इसको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया है, मैच फील्ड कर लिया है। एंड हमारी जो करंट एड्रेस लिस्ट है वो कौन सी है, LPS है। डॉक्यूमेंट 1 में भी, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 और डॉक्यूमेंट 4 में। ठीक है, और दिस सप्रेस लाइन विद जस्ट एम्प्टी फील्ड, अगर कोई एम्प्टी फील्ड होगी तो उसमें वो सप्रेस कर देगा। सो हेयर, और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि अगर ये ऐसे दिखाएगा टाइटल फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसके नीचे एड्रेस लाइन, और अगर आप चाहते हैं कि कंपनी नेम सबसे ऊपर आए तो यहाँ पर आप कंपनी नेम दे सकते हैं, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, या आपका जो भी आप करना चाहें उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, सो आई वांट टू क्रिएट लाइक दिस। ओके, और इफ यू वांट टू डिलीट एनीवन सो यू कैन डिलीट आल्सो। इफ यू वांट टू डिलीट इट हियर सो यू कैन डिलीट इट। So I am going to include this. Now, अब यहाँ पर आप चेक करिए कि क्या आप ऐसे ही चाहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ कैसे आएगा, LPS आस्था सिंह बीकानेर नॉट मैच्ड येट। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अपन ने क्या नहीं कर रखा है, जिप और सिटी को डिलीट नहीं कर रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जिप और सिटी को मूव भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको मूव कर रहा हूँ just like this. If you want to select this, और city को अगर आप चाहें just like here, तो you can move it. If you want to move it here, right, left, ठीक है। तो city अपन ने इंक्लूड नहीं कर रखी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, ठीक है। तो ये अपने से मांग रहा है कि आपको जो है सिटी और एड्रेस फिल करनी पड़ेगी। सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक न्यू बना लेता हूँ, जहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम इंक्लूड कर रहा हूँ, लास्ट नेम एंड देन कंपनी नेम, एंड हमने क्या एड्रेस लिया था। ओके, तो यहाँ पर ये ओके, ये कुछ ऐसा दिखेगा, कंपनी नेम वगैरह नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ओके कर लिया।
कंपनी नेम सबसे पहले आ रहा था, अब मैंने क्या कर दिया कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम और फिर उसका बीकानेर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बट इसको अगर आप और भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक एडिट। तो मैं लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को तो एक साथ करना चाहता हूँ, बट जो कंपनी नेम है उसको नीचे करना चाहता हूँ। तो ऐसे लिखाएगा आस्था सिंह ऑफ एलपीएस, और एड्रेस लाइन को मैं और भी नीचे करना चाहता हूं, जस्ट लाइक दैट। तो अब ये कैसे लिखाएगा, आस्था सिंह एलपीएस बीकानेर। यहाँ पर मैंने इसको ओके किया, फिर वहां पर मैंने इसको वापस ओके किया। नाउ यू कैन सी दैट आस्था सिंह एलपीएस बीकानेर ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर मैं अब नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट में यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप इसको सैल्यूटेशन देना चाहते हैं, तो सैल्यूटेशन मैं अभी यहाँ के लिए नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर अनटिक ही कर देता हूँ, एंड देन नेक्स्ट। यस, यहाँ पर ये मेरे से लेआउट मांग रहा है कि आपका लेआउट आप इसको कैसे करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस, ओके। और अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप जैसे बाय डिफॉल्ट है वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे फिनिश। अब आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि सर यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लिस्ट, ये तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं रहा, ये तो केवल फील्ड नेम को दिखा रहा है। तो आपको अगर इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स देखना है तो यहाँ पर देखिए मेरा मेल मर्ज विजार्ड का एक अलग से टैब खुल गया है। तो इस टैब में जब मैं यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में जाऊंगा तब आप देख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पर देखिए मेरी एक नई विंडो खुल चुकी है। यहाँ पर ये मेरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रवीण त्रिपाठी एलपीएस बीकानेर। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर ये अक्षत यादव के लिए भी दिखा रहा है, और यहाँ पर ये आस्था सिंह के लिए भी दिखा रहा है, ठीक है। और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको बोल्ड आप कर सकते हैं, व्हाट एवर यू लाइक टू डू, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टूड। और इसको आप रिसाइज वगैरह भी कर सकते हैं, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट द मेल मर्ज। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे।